Okay, hello everyone. So my name is Shahid and today's session is regarding SUSI program. तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम जो SUSI प्रोग्राम के अंदर दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं. वन इज जस्ट फॉर फीमेल्स एंड वन इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. तो हमारे पास जो राहिमा है, शी वाज द पार्ट ऑफ फीमेल सेक्शन के SUSI का वो पार्ट जिसके अंदर सिर्फ फीमेल्स जा सकती थी. ये उस प्रोग्राम का हिस्सा थी. तो हमें ये उस प्रोग्राम के बारे में बताएंगी. और जो बाकी वो जो हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर्स हैं वो सुसी के कंपैरेटिव पॉलिसी कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के सेक्शन में थे. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन और हम राहिमा से ही स्टार्ट करते हैं. तो राहिमा, आई जस्ट वांट कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, अपने इस एक्सपीरियंस को, अपनी जर्नी को ज़रा शेयर कर दें. एंड what the purpose of this program, what they are trying to teach you, the skills and each and everything. Share with us. Okay, मैं आपको unmute कर रहा हूँ and now you can start. Okay, Assalamualaikum guys. Can you people hear me? Yeah, we can hear you. Okay, so I'm Rahima and I'm a final year student here at IBA, and I was selected for this SUSI Women Leaders Program this year, I mean in 2023. And firstly, I would say that most of the people may think that SUSI Women Leadership Program is the same as SUSI Public Policy. I would say that no, it's different. It's kind of different in different things in such a way that in SUSI Women Leaders Program, there will be, as mentioned in the name, there will be only women in this program. And the purpose of this program will be basically to teach you how women leadership is linked with the public policy. So mainly the main purpose is to teach you about the women leadership. And obviously when you say about the leadership, is not only taught with the education, with the learning, with the lectures, but also with the practice. So yeah, I will just say a bit about how it was and what was the purpose. So yeah, we had I remember it was, I think, 24 girls from 24 countries. So, and from Pakistan, I think we were only 4 people, so it's kind of more diverse. And we had like guest speaker sessions and also our class lectures, which was related to these leadership and how women can be effective leaders, what are the problems with these women leadership, and what kind of like problems generally women face in the entire world. So yeah, we will, like, you will have the opportunity to learn from the experience of different people along with the participant, and also from the female leaders in the field, which includes both the um, government officials of America and also the big female leaders, including in different companies, in IT companies, for example. So, yeah. Okay. Okay, so now I am going to Syed Hassan and I will request him to share his experience with us and how was his journey and what he learned from this uh, whole process. Hello guys, hello everyone. I hope I'm audible. Yeah, you are audible. Okay, so I was selected as a student leader for the SUSI program of 2023. It was basically just as Sir Shahid told you that we were basically selected for this comparative public policy making. In my opinion, it was like such an eye-opening experience, and it was generally a new thing. For me, it was like a totally different kind of story, seeing a different new world that's technological, more advanced than us. But the main thing that I learned was, and what they were trying to teach us was that what is a community? How do you define community? And what is the impact of community on the overall society or the overall, like in the bigger picture? Community starts from one person or two person, and then they grow towards making it a whole society that can be of the same ideology. They were basically trying to teach us more about anthropology, how cultures interact with each other, and how people from different ethnicities try to communicate and live under the same umbrella. So what about the policy making? So it was the section of like how to live, how different society, different community interact with each other. But what about the Exactly. policy making? It was another Generally, I section. was
No, it was in this section, but generally I am from an IT background, so I was trying more to relate the policy making with IT. Okay. So whenever they would ask me a question and some sort of questions like that, I would generally relate it like any policy making, and I would integrate IT into that, Okay. or AI into that. Okay, so now I just want to कि शाहजेब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें हमारे साथ. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. जितने भी इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, हम वन बाय वन उन सब क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे. एंड वी विल ट्राई कि हमारे पास जितने गेस्ट स्पीकर्स हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देंगे कि हाउ वी कैन मेक दीज क्वेश्चंस आंसर्स फ्रॉम बेटर टू बेस्ट. ठीक है, तो शाहजेब प्लीज गो मूव ऑन एंड अपना सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें. हाउ वाज दिस जर्नी फॉर यू? Thank you, Shahid. Before moving on to what you asked, I must extend my gratitude to all of you for this opportunity and for organizing such a useful and productive webinar and having all of us together. Okay, I was one of the participants in SUSI 2023 in public policy making at University of Massachusetts with Abdul Qadir and Hussein. So we were 20 people from Pakistan. The experience overall was amazing and can definitely not be summed up into 2 minutes. But to keep things short, I would say the focus of the whole program was mainly on three major points. Firstly, as Hussein rightly mentioned, the community development, that was one of the primary, you could say, focus of the whole program. We always talked about how you as an individual can contribute to the community, and how communities, when developed together, can create a culture, and then we could develop cultural harmony between different cultures. So community was definitely one of the primary focus. The second primary was public policy making. We always talked about health sector. We talked about legal system of United States, and then compared those system with that of Pakistan. We talked about even minute things, for instance Bitcoin, for instance digital currency, for instance AI, the role of AI in public policy making. We talked about leadership. So this whole part was related to public policy making. And the third major important part was um, developing cultural harmony. So we were always exposed to certain activities through which we always learned more about US culture. We had an opportunity to tell more about Pakistani culture. And as Rahima rightly mentioned, the program of women leadership is a more diverse, in a sense that it has participants from other countries, but this program is exclusively for Pakistani students. Yet I would say there is an opportunity to interact with other cultures, as at the same time there are different cultural programs happening at UMass. So for instance, when our program was being conducted at UMass, there was another program, SUSI for MENA region, from Middle East and North Africa, which had the participants from 5 countries. They were working on entrepreneurship and economic development. So we had activities together, and that included diversity in our program too. Okay, okay, thank you. I will now ask अब्दुल कदीर हमारे साथ हैं. अब्दुल कदीर का इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो शायद वो हमारे साथ नहीं होंगे. तो अभी हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन वाले सेक्शन की तरफ चले जाते हैं. अच्छा, अभी आपको सूसी एप्लीकेशन अगर आप में से काफ़ी लोगों ने देखी हो, तो इसके अंदर अच्छा, मैं अब सब पार्टिसिपेंट, अभी हमारे जो स्पीकर थे इनको अनम्यूट कर रहा हूँ. सो कीप योर सेल्फ अनम्यूट एंड शेयर योर थॉट्स. जब आप कोई भी शेयर कर सकते हैं. सो लेट मी अनम्यूट यू ऑल. ओके. अच्छा, तो अभी इस एप्लीकेशन को अगर आप में से काफ़ी लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा, तो इस एप्लीकेशन में हमारे पास एक पोर्शन है जहां पर अपने वॉलंटियर एक्सपीरियंस शेयर करना है, एक में अपनी मेंबरशिप और एसोसिएशंस के बारे में बात करना है, फिर एक पर्सनल स्टेटमेंट है हमारे पास 250 वर्ड्स की. ठीक है, जिसमें आपने अपने बारे में बताना है. व्हाई डू यू थिंक यू आर कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट फॉर दिस इंस्टीट्यूशन, व्हाट डू यू कंट्रीब्यूट टू योर फेलोज एक्सचेंज. हम अभी क्या करेंगे, हम पहले दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे. एक तो आपने कौन से इशू को डिस्कस किया था, लाइक राहिमा ने कौन से इशू को डिस्कस किया था अपनी एप्लीकेशन में, सैयद हुसैन ने किसको डिस्कस किया था, शाहजेब अली ने किस इशू को डिस्कस किया था, और उसकी पॉलिसी के बारे में बात की थी. क्योंकि यहाँ पर एक इशू है, गिव वन एग्जांपल ऑफ policy in Pakistan which you believe need improvement. If you had the power, how would you change it and make it better or more effective? तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैटर कर रहे हैं.
और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरे नंबर पर हम जाएंगे पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर, और फिर तीसरे नंबर पर थर्ड स्टेज के ऊपर हम छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं हम उनको कैटर करेंगे। सो राहिमा, आई जस्ट वांट कि आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जिस इशू को डिस्कस किया था, प्लीज डिस्कस विद अस कि आपने उस इशू को कैसे डिस्कस किया था एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी व्हाइल डिस्कसिंग इन द एप्लीकेशन। Okay, so basically the question in our term was ke, what is the, I think it was ke, what's the policy in Pakistan that you think is outdated? So it's almost similar to this. I would suggest ke pehle aap maybe related to your field, or maybe something that you really think that this is something really outdated and you need to bring change in that thing. So I remember I did about these hudud law. It's also called the rape law in Pakistan. So basically आपने करना ही होता है कि पहले क्योंकि obviously there are people from USA that they does not know कि पाकिस्तान में कौन सी पॉलिसी या फिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो you need to explain them कि ये पॉलिसी है क्या. So first मैंने क्या किया था कि हुदूद लॉ या फिर ये जो हमारे पास रेप लॉ होती है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि ये होती क्या है. देन आई सेड कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दीज लॉ एज पर मी. तो उसमें मैंने इस चीज को रिलेट किया था कि हाउ लाइक how this is not a good policy, or maybe how people are getting affected by this in the negative terms. आपने वो करना होता है. एंड लास्टली फिर आपने कहना होता है कि हाउ कैन यू चेंज दिस पॉलिसी. उसके लिए सी जब हम लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम this is something very general, हर किसी को maybe same problem suffer हो रही हो. However, what you can make unique in these question is क्या उसे लाइक सोल्यूशन आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो, फिर मे भी सोल्यूशन आप कैसे यूनिक बना सकते हो. तो उसके लिए ऑब्वियसली फर्स्ट यू नीड टू रिलेट इट विद योर ओन फील्ड कि आप अपने फील्ड से रिलेटेड इसमें क्या चेंजेस ला सकते हो, फिर मे भी किस तरह से इंप्रूवमेंट ला सकते हो. So yeah, this is the overall thing. But again, I would suggest कि अगर you think that the policy that you want to discuss is not related to your field, still do your research and research बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको पता चले कि like क्या है. और even if you want, you can include maybe some statistics, maybe some facts, maybe some quotation, anything Okay. that can make it more unique or maybe personal. Okay. Sayyid Hussain, and now it's your turn. Please explain the issue you discussed in the application and how you explain this, what was your strategy. Okay, so for the policy writing, what I did was that, as I mentioned earlier, that I'm from IT background. So what I did was that I mentioned the policy of census, Mardam Shumari. So I write that what is the need of, like, if the government is hiring 2 or 3 people and they have to roam from street to street, from house to house, and knock door to door and ask how many people are there, and like most of the people nowadays have cell phones, mostly everyone. So why don't the government conduct a survey and just like let it loose and storm it over the people? That would then, like, the government would be much more facilitated with this thing. मोर ओवर पॉलिसीज, अगर आपको पॉलिसी राइटिंग करनी है तो आप ये देखें कि आपकी जो डिग्री है वो किस चीज़ की है. आप मोस्ट ऑफ उसको अपनी डिग्री के साथ रिलेट करें. लेट से एक बंदा सोशल साइंसेस का है, वो पॉलिसी राइटिंग में अपने सोशल साइंसेस के साथ उसको रिलेट करे. एक बंदा आईटी का है, वो आईटी से रिलेट करे. कोई बंदा इंग्लिश लिटरेचर का है, कोई मेडिकल का है. तो जस्ट ट्राई टू फाइंड पॉलिसीज दैट आर रिलेटेड विद योर डिग्रीज, फाइंड लूप होल्स इन इट एंड देन ट्राई टू अमेंड दोज एंड जस्ट बी रियलिस्टिक एज पॉसिबल. Okay. So, Shazib, now it's your turn. Let me unmute. Thank you. You are muted. Yeah. Okay. All right. Thank you, Shahid. I think the last point that Hussein mentioned, be realistic, is very important. So before telling what I wrote in answer, I would say that do not ever try to copy any idea from anywhere. Write your own idea. It should be something that you personally observed and then wrote about it. तो कोई ऐसी चीज लिखें जो आपने इर्द गिर्द में देखी, अपनी फील्ड में देखी, कोई भी ऐसी चीज जो ऐसी पॉलिसी आपको लगती है कि वो आउटडेटेड है, बहुत पुरानी है और इनइफेक्टिव भी है. तो मैंने जो पॉलिसी उन दिनों में जब हम एप्लीकेशन प्रोसेस फिल कर रहे थे, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सिंध, तो आई डू नो द सर्कमस्टेंसेस इन सिंध. उन दिनों में सिंध में टीचर्स की रिक्रूटमेंट का एक प्रोसेस आपको पता है कि जारी था, एंड IBS अखर वाज कंडक्टिंग द टेस्ट फॉर रिक्रूटिंग ऑल द प्राइमरी स्कूल टीचर्स. सो दिस इज समथिंग आई रोट अबाउट कि जो हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स की, दैट इज वेरी मच आउटडेटेड. और खास तौर पे प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए
दैट इज आउटडेटेड पॉलिसी कि आप एमसीक्यूज की बुनियाद पर एक टीचर को पूरी क्लास पूरा स्कूल यानी उनके हवाले कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग विदाउट एग्जामिनिंग के ही और शी नोज हाउ टू टीच, यानी उनकी टीचिंग मैथोडोलॉजी कैसी है, टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, उन्हें पेडागोजी की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनको सब्जेक्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो लिहाजा इनको टीचर रख लिया जाए। तो दिस इज व्हाट समथिंग आई रोट एंड देन आई सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ लेंथी डिटेल प्रोसेस कि जहां पर सबसे पहले तो आप उनकी नॉलेज बेशक थ्रू एमसीक्यूज असेस करें, यू शुड ऑल्सो असेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि उसके बगैर आप छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। एंड देन यू शुड ऑल्सो असेस कि उनकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, टीचिंग मैथोडोलॉजी जो लेटेस्ट दुनिया में चल रही है क्या वो उन चीजों से अवेयर है या नहीं। So this is something I wrote about it. Though my field was law, Sharia and law, but I wrote something that I had personally observed in my surroundings. So be realistic. Whatever you observe, you should write about it. Okay. Okay, Abdul Kadir, are you with us? So if you are, so you can unmute yourself and first, Yeah, Shahid hai. okay, let's introduce जी yourself शायद and then share the problem you discuss in the application. Okay, thank you first of all for letting me in, and sorry guys everyone for because network issue था मेरी तरफ. Hello everyone, I'm Abdul Kadir from IBA Karachi and I'm pursuing economics and I'm a final year student. तो मैं भी था SUSI Comparative Public Policy program में, and the policy which I discussed in my application was यार आपका जो syllabus outbreak है, the curriculum you follow in the lower school या middle school level तक, तो वो आपका बहुत outdated है. लाइक अब पर्सनली जो मैंने वहाँ पे चीज लिखी थी वो थी कि यार आपका स्पेशली कंप्यूटर स्टडीज का जो आपके पास एक सिलेबस है, या तो वो काफी स्कूल्स में है ही नहीं. बिकॉज मैंने कुछ सालों तक टीचिंग किया तो मुझे आइडिया है कि यार बच्चों को आप एक आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हो तो वो यूनिवर्सिटीज में आते हैं आगे जब जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है. तो आपका जो कंप्यूटर स्टडीज का स्पेशली जो कोर्स है आउटब्रेक है वो एक आउटडेटेड है. मतलब आप देखो तो जहाँ पर पहले तो है नहीं, जहां पर है वहां पर आप लोग बहुत पुरानी चीजें पढ़ा रहे हो. लाइक लिटरली मैं काफी बुक्स में देखी थी जहाँ पे वो विंडो एक्सपी के बारे में बता रहे थे कि हाउ टू इंस्टॉल इट, हाउ टू यूज इट. ठीक है, मतलब एक एलियन चीज थी, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि आप उस चीज को आप हिट ही नहीं कर रहे जो चीज आपके पास न्यू है. लाइक अगर विंडो 11 आ चुकी है या आपके पास कुछ दूसरी चीजें आ चुकी हैं, क्यों क्लाउड आ चुका है, लेकिन आप उनको छोड़ के आप ऐसी चीज पढ़ा रहे हो जिसका आप दुनिया में कोई यूज ही नहीं है. तो ये आउटडेटेड पॉलिसीज हैं. लेकिन अगेन आप मतलब ऐसी चीज पकड़ो कि जो आपको रियलिस्टिक लगे. अगेन आई विल बी विद शाहजेब एंड हुसैन कि आप ऐसी चीज पकड़ो जो रियलिस्टिक हो और आपके लेवल तक आप उसको सॉल्व कर सको. अब ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर पोजीशन मिले और आप उसको सॉल्व ना कर पाओ तो दैट वुड बी समथिंग कि आप बातों में कुछ और हो और करने में कुछ और, तो तजाद हो जाएगा. तो मेक श्योर कि जो आपके लेवल की चीज हो आप उसको हिट करो. That would what I will include. ओके ओके, सो अभी अगर हम देखें हमारे पास टाइम कम है. अभी मैं दोबारा लिंक आपके साथ शेयर करूंगा तो हम उसको ज्वाइन करने के बाद हम पर्सनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे. अभी हम वाइंड अप कर रहे हैं. तो मैंने अभी तक ये ऑब्जर्व किया कि हमारे जितने भी गेस्ट स्पीकर्स हैं इन्होंने प्रॉब्लम्स जो भी डिस्कस किए हैं वो बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं. हर प्रॉब्लम को बहुत डीप डाउन करके एक नैरो करके एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से रिलेट करके उस प्रॉब्लम को बनाया गया और फिर उसका एक सोल्यूशन डिजाइन किया गया. सो यहाँ से हमें एक बात पता चलता है कि हमें बहुत जनरल अपना प्रॉब्लम नहीं रखना, हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने टॉपिक को डिस्कस करते हुए. और देन most important thing, we have to be very realistic and while making the strategy to solve that problem, while making the policies. Okay, हम अभी इसको एंड कर रहे हैं और मैं दोबारा लिंक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, उसके थ्रू आप ज्वाइन करें एंड देन वी विल रीस्टार्ट दिस मीटिंग अगेन.